Welcome to today's online English class. Dear students, today we are going to read and discuss a beautiful passage. The name of the passage, the title of the passage is The Jungle Safari. Now, this is a personal account the writer has written about his experience on his visit to a national park, that is Kanha National Park. इस पैसेज के राइटर ने कभी कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए गए थे और अपनी सारे एक्सपीरियंसेस को वो इस कहानी में, इस पैसेज में लिखे हुए हैं. एंड वी विल रीड टुडे द पैसेज. Now, before getting into the passage and reading it, let us understand what is a national park. The passage is about the writer's visit to Kanha National Park. तो नेशनल पार्क क्या है पहले वो जानते हैं. अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी दोनों एक ही चीज़ है. अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इज़ अ रिजर्व्ड फॉरेस्ट area where birds and wild animals are protected and conserved. I repeat, a national park or a wildlife sanctuary is a reserved forest area where birds and wild animals are protected and conserved. यहाँ पे शिकार करना मना रहता है, जानवरों को मारना मना रहता है, and without permission you cannot enter into these areas. So let us now read the first part of the passage. Jungle Safari. My excitement was at its peak. We were going to visit Kanha National Park, which provided setting for Rudyard Kipling's classic novel, The Jungle Book. Now everybody remembers the story ऑफ द जंगल बुक, और उस पर एक फ़िल्म भी आई थी, और उस फिल्म की कहानी इसी कान्हा नेशनल पार्क में बनी हुई है. शूटिंग नहीं हुई, बट द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन दीज फॉरेस्ट एरियाज. नाउ एक्साइटमेंट मीन्स उतावलापन, ईगरनेस. ओके. एंड जंगल बुक यू रिमेंबर द स्टोरी अबाउट मोगली. तो आगे पढ़ते हैं. We slept early that night so that we could get up early the next morning. As the alarm rang, my sister and I jumped out of our beds and quickly started to get ready for our thrilling journey ever. Thrilling means exciting, romanchak, adventurous. A visit to Kanha National Park on a boat. That means they were going to visit Kanha National Park by boat. This is the water area और यहाँ से ये लोग बोट पे जाने वाले थे. A visit to Kanha National Park on a boat. This was the first time we were going to experience it, and the very thought infused zeal in me. Experience means feel, FEEL, feel. Experience में also means एहसास करना या फिर अनुभव करना. Infused means to develop, to create, पैदा करना. Zeal means enthusiasm, जोश. So going to Kanha National Park, that very thought, and traveling in a boat, that infused zeal in the writer. As we approached the lake, the foggy weather did not deter our spirits. Deter means to stop you from doing anything. तो deter could not deter our spirits. इसका मतलब वेदर ख़राब होने के बावजूद हमारे स्पिरिट्स, हमारा जोश कम नहीं हुआ.
In the next line, the writer describes the beauty of the place. Let us read it out. There was an exclusive boat waiting for our family. We quickly hopped into the boat while the mist unfolded over the waters of the vast artificial lake. I was mesmerized by the beauty of nature around me. मिस्ट का मतलब होता है कुहासा, जो सुबह सुबह ठंडी के दिनों में धुआं धुआं टाइप का होता है, जिसको हम फॉग भी कह सकते हैं. फॉग accompanied with water, that is called mist. Unfolded means opened, खुल गया. Artificial means man made, and vast means very big. Mesmerized means enchanted, overwhelmed, fascinated, यानी किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट होना, एकदम पागल हो जाना, भौचक्का हो जाना खूबसूरती देख के. सो आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड मी. Soon the mist started clearing. I saw the colors of the lake waters turn from silver to golden. The rays of sun kissed the waters, which dazzled my eyes. Now, in early morning, due to the white sky, due to the misty sky, it was silver colored. When slowly the sunshine brightened up, then the whole atmosphere became golden. यानी पहले सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था, बट जैसे ही सनराइज हुआ तो सारी चीज़ें गोल्डन हो गई. Suddenly, I spotted a herd of sambar deer close to the lake waters. Their agility and swiftness left me impressed as they disappeared into the forests hastily. Hastily and quickly. So this is the first part ends and the meanings are written. Excitement means eagerness. Thrilling means exciting. एक चीज़ बताना भूल गया, थ्रिलिंग का दूसरा मीनिंग है एडवेंचरस, तो आप एडवेंचरस भी लिख लेना. एक्सपीरियंस मीन्स टू फील. Infused means to developed. Approached means went near, पास जाना. Deter, to discourage from doing something. Fog, ये एक मिस्टेक हो गया हमसे. This should be foggy. Foggy means full of fog. Spirits मतलब मूड, willingness कुछ करने की इच्छा. Exclusive मतलब स्पेशल. Unfolded, opened, occurred, जो कोई बात का होना, that is called unfolded. Mesmerized, fascinated, to feel very attracted towards something, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना. Dazzled यानी sparkled, आंखें चमक जाना. Agility means the ability to move quickly and easily. फटाफट फटाफट किसी भी डायरेक्शन में घूम के जल्दी जल्दी निकल जाना. तो डियर लोग क्या होते हैं, बहुत एजाइल होते हैं. दे शो ए लॉट ऑफ एजाइलिटी. दे कैन मूव क्विकली. स्विफ्टनेस मीन्स क्विकनेस एंड डिसअपियर्ड मीन्स वैनिश्ड. मीनिंग और टू मीनिंग्स मोर. जील मीन्स एंथुजियाज्म. हेस्टली मीन्स क्विक. एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश. दैट्स ऑल. नोट डाउन द मीनिंग, read the lesson well and try to understand. In the next class we shall read and discuss the remaining portion of the story. Thank you and have a nice day.